you see between the characters. I think it's more than the story, it's really about the characters. दीपिका से दीपिकू. But you did call me that on set. Yes. I think ये नाम जो है ये बहुत ही एक टैलेंटेड राइटर मेरे राइट में बैठी हैं जूही चतुर्वेदी. ये उन्हीं का लिखा हुआ फिल्म है. ये आइडिया भी उन्हीं के दिमाग से आया था. सो आई थिंक ये उन्हीं ने ये नाम दिया था एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड सो दैट्स व्हाई नाम पीकू. इतनी सारी फिल्मों का प्रमोशंस आज तक हम लोगों ने देखा है, इतने सारे इनवाइट्स हमें आते हैं डे टू डे कि आप आइए, ट्रेलर लॉन्च है, लेकिन आपकी फिल्म का जो इनवाइट आया वो वाकई में अद्भुत था. एक वीडियो आया, मैसेज आया और उसने बताया कि फैमिली के साथ आइए. तो ये आइडिया किसका था पूरी तरीके से फिल्म प्रमोशंस का, क्योंकि कई जगह ऐसा आ रहा है कि आपका ये आइडिया था इस फिल्म को प्रमोशंस में? I think somewhere we have all contributed in whatever way possible. I think it stems from the idea of the fact that the film itself is a very, very personal journey, of Piku and Baba, and even in the moments that you see between the characters. I think it's more than the story, it's really about the characters. So even in terms of our communication, I think we've tried to keep it as intimate and as personal as possible. And this was one of the ideas that we came up with, and we hope all of you liked it. Yeah, sure. दीपिका एंड अमित जी, आपके लिए सवाल है. आप दोनों की केमिस्ट्री हमने ऑन स्क्रीन तो देखी, बट इन रियल अगर हम बात करें, हाउ इज़ योर रिलेशन विथ योर डैड? एंड अमित सर, आपका रिलेशन कैसा है विथ योर डॉटर? जी बहुत अच्छा है. सब जी बहुत अच्छा है. और फिल्म के दौरान ऐसा लगा कि जिस दिन हम सब की शूटिंग ख़त्म हो गई, ऐसा लगा कि ये परिवार जो है वो बिखर गया है. और बड़ा दुख हुआ हम सबको, कष्ट हुआ कि अरे अचानक हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे. इस तरह का एक वातावरण बनता है हमारे सेट पे और इस तरह का एक एटमॉस्फेयर रहा. तो ये आपको बता सकता है कि कितने नज़दीक हैं हम सब एक दूसरे के. इस स्टोरी का आइडिया मतलब ऐसे जहन में आया और ऐसे अतरंगी किरदार आपके आसपास भी रहे हैं क्या? कैसे आइडिया आया, ये कहाँ से आया ये तो नहीं मालूम सच में. जहाँ से सारे आइडियाज़ आते हैं सबके वो अच्छे अच्छे वहीं से आया होगा. लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स सच में हैं, मेरे आसपास हैं, कुछ सुजीत के आसपास हैं, कुछ रॉनी के आसपास हैं. तो व्हेन द आइडिया केम, उसके बाद दिस डिस्कशन, डेवलपमेंट ऑफ दीज कैरेक्टर्स, ऐसे एक बाबा, उनकी एक ऐसी लड़की, आपने कई लोगों ने ऐसा देखा है कि there is a girl who is taking care of her father or mother. So, one knows these characters somewhere from my own mind, somewhere borrowing from, brainstorming sessions that we had together. Ultimately, ऐसे अतरंगी character बन गए, and I like little humor in life. तो कुछ भी problem हो, constipation भी हो, तभी. Hi, Deepika. Urvi here, towards your right. Hi. Hi. Deepika, this is the first time you would be playing a Bengali girl in the movie. What preparations did you make for the character? Was there anything specific you had to do? I think when you're doing a film like Piku and Shujit Sarkar is your director, there's no escaping anything to do with Bengali. He's just, I think for me that was my biggest learning, to be surrounded by Bengalis. Juhi herself is not, but she's grown up. I remember chatting once. Okay. Yeah, I remember chatting once with her and asking her how come there was all, this influence in the film. Having said that, Piku is still today's girl. There is that influence of being a Bengali and of Calcutta and having grown up there. Piku's grown up in Calcutta. But she's lived most of her life in Delhi. So I think it's just that little influence. And then you have a director who's, he is a Bengali himself. So I think he was my teacher come director. Hi guys, this is Prerna from Rajshri. Firstly, I would like to say that the trailer looked amazing. It was really very cute. And Deepika, my question is for you. You've worked with Abhishek and with Amit ji. So who was a better co-star and why? ये परिवार में आप लाज रख लेना बेटी, बाबा की लाज रख लेना प्लीज.
Okay, let's put it this way. I think Abhishek's more... Actually, I can't even say that because he has an amazing sense of humor. What I was going to say is that Abhishek's more fun to work with, but I got to learn a lot from Amitji. But the reverse can happen also. I think they're just too talented, father and son both.